Welcome back, dear students. Today we have lecture 2 in application of derivative. We are discussing second application of derivative, tangent and normal. Last time in first lecture I told you about first application, rate measurement, and we also started our tangent and normal. Today I am continuing that. So first of all, there is a problem for you. Note करिए जल्दी से. This problem was in exam of IIT 2007. Problem is tangent to the curve at the point c comma e to the power c intersect the line joining the points on the left, on the right, at no point, at all points. So I am going to start with this problem. आप नोट करिए, आप भी बनाइए और मैं भी इस प्रॉब्लम को करता हूँ. So we are talking about tangent to the curve y is equal to e raised to the power x. We know the graph of e to the power x. There is a point P having coordinate c comma e to the power c, another point c minus 1, let's say point q, c minus 1 e raised to the power c minus 1. We have curve y is equal to e to the power x and a point r having coordinate c plus 1 e raised to the power c plus 1. Fine. प्रॉब्लम में बोला गया है tangent at the point, so we have to take tangent at point P joining the line point Q and R. So we have line joining the point Q and R, tangent at point P. Now we have to decide this tangent and this chord, where will they cut? This point is x is equal to c. Fine. So we have to decide this red line and this black line, where will they cut? They will cut at no point. They will cut in the left of x equal to c. They will cut on the right of x equal to c. That we have to decide. We have curve of y is equal to e to the power x, tangent at x equal to c, line joining the points q and r. Now we have to decide line joining q and r, which is qr, will cut tangent where? On the right of x equal to c, on the left of x equal to c, or they will not cut. This we have to decide. Clear? So what I am going to do, I am going to find slope of QR. It is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So it is e to the power c time e minus 1 upon e divided by 2. मैंने स्लोप निकाल लिया. स्लोप किसका निकाल लिया? क्यू आर का. नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी. Now I am finding slope of tangent at P. That will be dy by dx for curve at the point c comma e to the power c. So dy by dx is how much? E to the power x. Y equal to e की power x का dy by dx e to the power x at the point c comma e to the power c
this will come e to the power c. Fine. I have found two things: slope of tangent at P and slope of QR. Student, here I am going to use a very good concept. समझिएगा ध्यान से. मैंने क्या है, मुझे ये पता करना है कि दो लाइन किधर कट करेंगी, लेफ्ट में कट करेंगी कि राइट में कट करेंगी या कट नहीं करेंगी. नाउ two lines will never cut when their slopes are equal, they are parallel. अपने को पता करना है कि रेड और ब्लैक लाइन वेयर विल दे कट. फाइन. मैंने स्लोप ऑफ क्यू आर निकाल लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी निकाल लिया. आर दे इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल. स्लोप इक्वल नहीं है मींस पैरेलल, लाइन पैरेलल नहीं है. पैरेलल नहीं है मतलब कट जरूर करेंगी. तो हमारा एक ऑप्शन था कट एट नो पॉइंट, वो ऑप्शन नहीं हो सकता. व्हाई? बिकॉज दीज टू स्लोप्स आर डिफरेंट, सो लाइन्स आर नॉट पैरेलल. सो this is 100% they will cut. Now we have to decide where will they cut. They will cut on right hand side or they will cut on left hand side. Is it? So now where will they cut? How to decide it? बोर्ड पे देखिए. So students, डायग्राम को देखिएगा. If we have to decide where will two line intersect, will they intersect on right hand side or they will intersect on left hand side? To decide it, just go through their slopes. If above line, upper line has slope more than lower line, upper line has slope. Now student, see these two diagrams. These two diagrams are clearly explaining where will two line intersect. Two line will intersect on right hand side or on the left hand side. It totally depends on their slopes. For example here, upper line, lower line. Upper line has slope less than lower line. Lines are cutting on the right hand side. Upper line, this one, यहाँ पे ये upper है. Upper line has slope more than lower line. Line cut on the left hand side. क्या बोला मैंने? Upper line का slope lower से कम है. Line cut on the right hand side. Upper line का slope lower से ज्यादा है. Line cut on left hand side. Now, in our diagram, जो हम लोगों ने tangent का diagram बनाया था, उसमें upper line कौन थी? QR और lower line कौन थी? Tangent. तो let's check. Slope of QR is e raised to the power c, e to the power minus 1 by e by 2, and slope of tangent, that is e to the power c. Now you have to decide out of these two which one is bigger. So since e minus 1 by e greater than 2, so e to the power minus 1 by e by 2 greater than 1, so slope of QR is greater than slope of tangent. Slope of QR is greater than slope of tangent. Slope of QR is greater than slope of tangent. और जो डायग्राम बनाया था, डायग्राम में जाके देखिए, डायग्राम में QR किधर था? ऊपर था. टेंजेंट किधर थी? नीचे थी. स्लोप ऑफ QR ग्रेटर देन स्लोप ऑफ टेंजेंट. ऊपर वाली लाइन का स्लोप ज्यादा है, नीचे वाली लाइन का स्लोप कम है. तो आउट ऑफ दीज टू डायग्राम कौन सा लेंगे? ऊपर वाली लाइन का स्लोप ज्यादा, नीचे वाली लाइन का कम. वी विल टेक दिस डायग्राम and according to this diagram, where are line intersecting? They are intersecting on the left side. So what will be our answer? Our answer is they intersect
on left of x is equal to c. Clear? I have found slope of QR, slope of tangent. Since slope of QR is greater than slope of tangent, that's the reason two lines will intersect on left of x equal to c. How? With the help of these diagram. Two lines intersect on the right side if upper line has slope more than upper line has slope, two line intersect on the right hand side if upper line has slope less than lower line. Upper line has slope more than lower. Two lines intersect on left hand side. In our case, same is happening. Upper line has slope more than lower line. That's the reason we will get intersection on left side. So our answer, they intersect on left of x equal to c. Clear? Note करिए. चलिए जो थ्योरी पार्ट हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए नाउ पुट द हेडिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. Important points to remember. Point number 1. Point x1 comma y1 lies on curve, tangent and normal. Fine. Student, last time we have seen x1 comma y1 is the point at which we talk about tangent and normal, and it is clearly understood. x1 y1 lies on curve as well as on the tangent as well as on the normal. So this point will help you in making the equation. x1 y1 lie करता है मतलब satisfy करता है. तो remember, one relation between x1 and y1 will always come satisfying x1 y1 with curve, with tangent, with normal. Point number 2, if tangent drawn to given curve at some point P is parallel to x-axis or perpendicular to y-axis, then dy by dx at x1 y1 will be taken 0. dy by dx at x1 y1 will be taken 0. In case of normal, dx upon dy at x1 y1 is equal to 0. Now student, nothing special here, point must be clear to you. Tangent drawn to given curve is parallel to x-axis. Tangent x-axis के parallel है, मतलब slope of tangent equal to slope of x-axis.
we know that slope of x-axis is what? 0. And slope of tangent dy by dx. So whenever such information is given, tangent parallel to x-axis, we will use mathematical formula dy by dx equal to 0. बात की जा रही है किसकी? टेंजेंट की. नाम लिया जाए नॉर्मल का, तो उस केस में फॉर्मूला क्या लेंगे? dx अपॉन dy इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल होना बोले तो स्लोप 0. फॉर टेंजेंट dy बाई dx 0, फॉर नॉर्मल dx अपॉन dy 0, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? माइनस टाइम dx अपॉन dy. नाउ point number 3, if tangent drawn to given curve at some point P is perpendicular to x-axis or parallel to y-axis, then dx upon dy at x1 y1 is equal to 0. In case of normal, dy by dx at x1 y1 is equal to 0. क्लियर? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात करी थी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. नाउ वी आर टॉकिंग टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो हाउ मच एंगल विल बी फॉर्म? 90. स्लोप 1090 which is infinity. तो if tangent perpendicular to x axis, तो slope of tangent क्या होगा? Infinity. Slope of tangent means dy by dx infinity. dy by dx infinity, तो उसका उल्टा क्या होगा? dx upon dy 0. मुझे लिखना चाहिए था dy by dx equal to infinity, बट मैं infinity यूज करने से बचना चाह रहा हूं, तो in place of writing dy by dx equal to infinity, I have written dx upon dy 0. Are you getting me? मेरा मन infinity लिखने का नहीं कर रहा था, तो जो चीज dy by dx equal to infinity है, same will be dx upon dy equal to 0. In case of normal, dy by dx equal to 0. Clear? So point number 1, x1 y1 lies on curve tangent as well as normal. Point number 2, tangent given parallel to x axis perpendicular to y axis, then what to take? Point number 3, tangent given perpendicular to x axis parallel to y axis, then what mathematical formula we should take? Is it? चलिए अब पहले प्रॉब्लम्स करते हैं, फिर आगे पॉइंट्स लिखेंगे. लिखे प्रॉब्लम. बोला गया है फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व x square by 9 minus y square by 16 is equal to 1 at which tangent is parallel to first part of the problem x axis, second part of the problem y axis. Clear? So here in this problem we have two parts. First part, tangent parallel to x axis, then we have to decide the point. Second part, tangent parallel to y axis, then we have to decide the point. We have to find the point at which
tangent is parallel to x axis, tangent is parallel to y axis. आप में से मैक्सिमम प्रॉब्लम को देख के तुरंत कैलकुलेशन में जुड़ जाते हैं कि dy बाई डी एक्स निकालो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये कर दो, पैरेलल टू एक्स ये कर दो. रुक जाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है. Here in this chapter, how you are proceeding the problem, it matter. For example, मुझे इस प्रॉब्लम को करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एज्यूमिंग लेट पॉइंट रिक्वायर्ड इज x1, y1. कोई डिवाइड बाई डी एक्स अभी मैंने नहीं लिखा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एज्यूमिंग द पॉइंट x1, y1. नाउ वी नो दैट x1, y1 लाइज ऑन द कर्व. सो one equation I am getting directly satisfying x1, y1 with curve. मुझे प्रॉब्लम में x1, y1 निकालना है. उसके लिए x1, y1 में दो इक्वेशन होनी चाहिए. फर्स्ट इक्वेशन आई हैव गॉट सेटिस्फाइंग x1, y1 विद कर्व. नाउ अब मैंने लिखा गिवन. व्हाट इज गिवन? Tangent is parallel to x-axis. So tangent is parallel to x-axis means what? dy by dx at x1, y1 is equal to 0. dy by dx at x1, y1 is equal to 0. या चलिए इसको पहले ऐसा लिखते हैं. Given tangent is parallel to x-axis, so dy by dx at x1, y1 is equal to 0. Tangent is given parallel to x-axis, so dy by dx at x1, y1 0. Now dy by dx निकालो. dy by dx निकालो, कितना होगा? 2x by 9 minus 2y by 16 dy by dx equal to 0. Do it. 2x by 9 minus 2y by 16 dy by dx equal to 0. So from here dy by dx will be 16 by 9 x upon y. So 16x1 upon 9y1 is equal to 0. It implies that x1 equal to 0. It implies that x1 equal to 0. We can call it equation number 2. Now x1 equal to 0 implies that we will put x1 equal to 0 here. The x1 equal to 0 implies that y1 square is equal to minus 16. Are you getting it? x1 को 0 रखो तो y1 square is minus 16, which is impossible. Which is impossible because y1 square cannot be negative. x1, y1 they are real values. So y1 square cannot be negative. So what's the answer? So problem has answer no point. Problem has answer no point. We have done the first part of the problem. Tangent is parallel to x-axis. Following that, at the last we are getting answer no point. We have done the first point when tangent is parallel to x-axis. Note करिए. We have assumed the point x1, y1. कर्व में satisfy किया, एक relation आ गया. Then using the information given, dy by dx 0, we are getting x1 0. Putting x1 equal to 0 in first equation, y1 square is equal to minus 16, which is impossible. तो ये मैंने क्या किया? ये मैंने प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट किया. नाउ आई एम कमिंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम.
Now I am coming to second part of the problem. Given tangent parallel to y-axis. Tangent parallel to y-axis, what will we use? मैंने आपको पॉइंट लिखवाए थे. Tangent parallel to x-axis, what we do? Tangent perpendicular to x-axis, parallel to y-axis, what we do? Tangent parallel to y-axis, in this situation we take dx upon dy equal to 0. So this we have dy by dx 16 upon 9, 16x upon 9y. So dx upon dy 9y upon 16x. In this way 9y1 upon 16x1 equal to 0. It implies that y1 equal to 0. This is equation number 2. Now y1 equal to 0 implies that y1 को 0 रखो, x1 is equal to plus minus 3. So what's our answer here? Our answer is clearly points 3, 0 and minus 3, 0. For the first part there was no answer, but for the second part we are getting two answer, 3, 0 and minus 3, 0. Is it? So in problem we have to find the point at which tangent parallel to x-axis, tangent parallel to y-axis. So taking the condition accordingly, we have solved the problem. For the first part, no answer. For the second part, two answer, 3, 0 and minus 3, 0. Is it? चलिए इसको अलग करते हैं. One more problem I am taking. One more problem. If curve y is equal to ax square minus 6x plus b passes through 0, 2 and as tangent parallel to x-axis at x equal to 3 by 2, find values of a and b. Clear? So once again problem has tangent parallel to x-axis. Curve is given y is equal to ax square minus 6x plus b. Curve is passing through the point 0, 2 and tangent is parallel to x-axis. Tangent is parallel to x-axis at x equal to 3 by 2. We have to find values of a and b. Fine. A और b की values निकालनी means what? There must be two equation between a and b. So पहला equation, since y is equal to x square minus 6x plus b passes through 0, 2. So 2 is equal to 0 minus 0 plus b. Getting it? we have put 0, 2 in the curve. Now tangent parallel to x-axis at x equal to 3 by 2. So given dy by dx for curve at the point x equal to 3 by 2 is equal to 0. स्टूडेंट इस पे ध्यान दीजिए. दिस टाइम नो x1 y1. आप कह सकते हो ये जो 3 by 2 आपको गिवन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x1. टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस एट x इक्वल टू 3 by 2.
तो 3/2 किसकी वैल्यू है? 3/2 इज द वैल्यू ऑफ x1 पैरेलल टू x एक्सिस, दैट इज द रीजन dy by dx 0. तो dy by dx 0 at which point? x equal to 3/2. Now what is dy by dx? 2ax minus 6 at x equal to 3/2 is equal to 0. So now put 3/2. Putting 3/2, what will come? 3a minus 6. In this way, a is how much? A is 2. This is our equation number 2. इक्वेशन नंबर 2 की जरूरत ही नहीं है, आंसर आ चुका है. एंड व्हाट आंसर वी हैव? a इज इक्वल टू 2 और उससे पहले b आ चुका है, b इज ऑल्सो 2. तो आवर आंसर्स a is equal to 2 and b is equal to 2. Our answers a is equal to 2 and b is equal to 2. नोट करिए. किसी का डाउट है पूछिए. a is equal to 2 and b is equal to 2. Clear? चलिए. Now important points to remember. Important points to remember. Point number 4. Important points to remember. Point number 4. If tangent और नॉर्मल, के बाद मैं दोनों की बात एक साथ कर रहा हूँ. टेंजेंट और नॉर्मल इज कटिंग equal angles with coordinate axis or intercepts of equal length. Then dy by dx at x1 y1 is equal to plus minus 1. dy by dx at x1 y1 is equal to plus minus 1. Result is valid for tangent and normal both. इसीलिए मैंने tangent और normal का. Result is valid for tangent or normal both. How is it happening? We are talking about tangent or normal cutting equal angle or intercept of equal length. So we are talking about such kind of situation. Tangent or normal cutting equal angle or intercept of equal length. So here in this situation, tangent making how much angle with x-axis? 45. Slope will be plus 1. Here tangent is making how much angle with positive x-axis? 135. So slope will be minus 1. So dy by dx equal to plus minus 1. dy by dx equal to here 135 degree and here 45 degree. 135 degree and
45 degree. So that's the reason dy by dx equal to plus minus 1. Important point number 5. If tangent is cutting equal intercepts with coordinate axis, then dy by dx at x1 y1 is equal to minus 1 only. In case of normal, dx upon dy at x1 y1 is equal to plus 1. स्टूडेंट इस पे ध्यान दीजिएगा. लैंग्वेज पे देखिए, इक्वल इंटरसेप्ट एंड इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों में फर्क होता है. व्हेन आई एम सेइंग इक्वल इंटरसेप्ट, दैट मीन्स intercept must be same in magnitude as well as same in sign. For example, +4 +4. But intercept of equal length +4 -4. जैसे यहां देखो, दोनों इंटरसेप्ट क्या है, मैग्नीट्यूड में भी सेम और पॉजिटिव है, लेकिन हियर पॉजिटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव इंटरसेप्ट. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेंजेंट कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, सो डायग्राम की अगर बात करें, so only this diagram is allowed. Only this diagram is allowed. When we are saying intercept of equal length, then both the diagrams are allowed. But in case of equal intercept, that means intercept must be equal in magnitude as well as equal in sign, same in sign. So that's the reason एंगल 135, तो डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 1. इन केस ऑफ नॉर्मल स्लोप क्या होता है, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई. तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस 1, अल्टीमेटली क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू प्लस 1. क्लियर? चलिए प्रॉब्लम लेते हैं इसमें. सो नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव प्रॉब्लम. नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व व्हिच आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस. फाइन. ऑलरेडी हम लोगों ने इस पॉइंट की बात करी है, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस इन अवर पॉइंट नंबर 4. टैंजेंट और नॉर्मल, एनी ऑफ देम इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, देन कंडीशन फॉर डिवाइड बाय dx इज प्लस माइनस 1. सो यूजिंग दैट कंडीशन वी विल डू दिस प्रॉब्लम. नोट करिए प्रॉब्लम को. इन द प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ tangents. मीन्स व्हाट वी हैव टू फाइंड, we have to find the point x1 comma y1. How many number of points x1 y1 we have, so many number of tangents can be drawn. So overall in this problem we have to answer for number of points x1 comma y1. So I am starting the problem assuming let tangent is drawn at the point x1 comma y1. Now we know that x1 y1 satisfy the curve. So x1 raised to the power 2 by 3 plus y1 raised to the power 2 by 3 is equal to 2 times a raised to the power 2 by 3. This is my equation number 1. Now given what is given? Tangent is equally inclined to the axis. Tangent is equally inclined to the axis has meaning dy by dx at x1 y1 is equal to plus minus 1. So now
dy by dx. From here, differentiation, three by two times x raised to the power 3 by 2 minus 1 plus 3 by 2 times y raised to the power 3 by 2 minus 1 dy by dx is equal to 0. In this way, dy by dx is minus time root over x upon y. So now minus time root over x1 upon y1 is equal to plus minus 1. It implies that x1 is equal to y1. Equation number 2. Fine. Is this okay? How is it coming? Squaring on both sides. Squaring on both sides plus minus will go. From here minus will go. So x1 is equal to y1. Now solving equation 1 and 2. Solving equation 1 and 2, x1 raised to the power 2 by 3 plus y1 raised to the power 2 by 3 is equal to 2 times a raised to the power 2 by 3 and x1 is equal to y1. Solving these two equations, we get 2 times x1 raised to the power 2 by 3 is equal to 2 times a raised to the power 2 by 3. We can cancel 2 with 2. So now from here we have x1 is equal to 1 and only one value a. 1 and 1 value a, since a greater than 0. Fine. We will get 1 and only one value x1 is equal to a. Now putting this value y1 is equal to a. So how many values we are getting for the point x1 comma y1? We are getting only one point a comma a. So what's our answer? Our answer, only one tangent is possible. Clear? We had to answer how many tangents can be drawn. Number of tangents will depend on number of points x1 comma y1. We are getting only one value for x1 comma y1, that is a comma a. So only one tangent is possible. Okay? Note kariye. Point number 6, important one. Tangent to a curve at the point P x1 comma y1 can be drawn even though dy by dx at P does not exist. dy by dx at P does not exist. देखिए इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिएगा. dy by dx एग्जिस्ट करेगा तभी टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ होगा? नहीं. dy by dx एग्जिस्ट नहीं करता है, स्टिल टेंजेंट नॉर्मल आर पॉसिबल. एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x raised to the power 1 by 3 at 0 comma 0. Fine. How much dy by dx? 1 by 3 x raised to the power 1 by 3 minus 1. So it is 1 by 3 upon में x raised to the power 2 by 3. So clearly dy by dx at 0 comma 0 is 1 by 0. But
tangent at 0 comma 0 can be found. How? Formula y minus y1 is equal to dy by dx x minus x1. It is y minus 0 is equal to 1 by 0 x minus 0. So 0 is equal to x. That's my answer. इस अपॉन वाले 0 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया तो क्या बचेगा 0 इक्वल टू x. So clearly we have tangent x equal to 0. So remember dy by dx does not exist. Still tangent normal can be found. Okay. Point number 7. A line tangent at one point of curve can be normal at some other point of curve. क्या लिखा मैंने? A line tangent at one point can be normal at some other point. A line tangent at one point can be normal at some other point. मैं डायग्राम बना रहा हूं. A line tangent at one point can be normal at some other point. इसको देखिए. पॉइंट P एंड पॉइंट Q. बताइए Q पे जो टेंजेंट आएगी, Q पे जो टेंजेंट आएगी दैट विल बी वर्टिकल. tangent at Q will be a vertical line. So this horizontal line is normal at Q. We have curve and clearly this red line is working as tangent at P and normal at Q. So you may have problem on such kind of situation. A same line working as tangent at some point, normal at other point. What mathematical formula relation we will take here? Use dy by dx at P is equal to minus time dx upon dy at Q. बताइए. If line is same, so at any point slope will be same. At P line is working as tangent, तो point P पे slope निकलेगा because of tangent to dy by dx. But Q पर line क्या हो गई normal, तो Q पर slope निकलेगा from the logic of normal, और normal का slope क्या होता है minus dx upon dy. तो whenever it is given to you tangent at one point, normal at other point, you will use the mathematical relation dy by dx at first point is equal to minus time dx upon dy at other point. One more thing, tangent at P passes through Q. Whenever problem has situation tangent at one point working as normal at other point, go for mathematical relation slope of tangent at first point is equal to slope of normal at second point. Tangent at first point passing through point Q. चलिए मैं एक प्रॉब्लम आपको करा रहा हूं उसके ऊपर. Find equation
equation of line, find equation of line working as tangent to the curve x is equal to 1 plus 2t square and y is equal to 4t cube minus 1. Line working as tangent to the curve at point P and normal at point Q. Find equation of line working as tangent to the given curve at point P and normal at point Q. Fine. So first, curve is given in which form? Curve is given in parametric form. Curve is given in parametric form. Let point P has parameter T1. So point P will be 1 plus 2 T1 square 4 T1 cube minus 1. Point Q has parameter T2. So point Q 1 plus 2 T2 square 4 T2 cube minus 1. So these are our point P and Q. Now tangent at P, normal at Q. Given line is tangent at P and normal at Q. So dy by dx at P is equal to minus time dx upon dy at Q. फाइन, चलिए dy by dx निकालते हैं. dy by dx निकालते हैं. dx upon dt how much? 4t. dy by dt how much? 12t square. So dy by dx will be 3t. So dy by dx at P. So this will come 3t1 dx upon dy at Q 1 upon 3t2. In this way t1 t2 is equal to minus 1 by 9. t1 t2 is equal to minus 1 by 9. Now tangent at P. Formula y minus y1 is equal to dy by dx at x1 y1 into x minus x1. So y1 is how much? 4 t1 cube minus 1. dy by dx 3 t1 x1 1 plus 2 t1 square. Passes through point Q, which is 1 plus 2 t2 square and 4 t2 cube minus 1. Clear?
we have written equation of tangent at P. Now this equation of tangent passes through point Q. This equation of tangent passes through point Q. So we will put this point in the equation of tangent. So 4 t2 cube minus 1 minus 4 t1 cube minus 1 is equal to 3 t1 into 1 plus 2 t2 square minus 1 plus 2 t1 square. 1 cancel, 1 cancel. So now 4 times t2 cube minus t1 cube is equal to 3 t1 into 2 t2 square minus t1 square. Now it is t2 minus t1 into t2 square plus t1 square plus t1 t2 is equal to 6 t1 t2 minus t1 t2 plus t1. फाइन, ये कैंसिल. अच्छा, इसको समझना मैंने क्यों कैंसिल कर दिया. दो सेम फैक्टर आप तभी सेम कैंसिल कर सकते हैं व्हेन दे आर नॉन जीरो. T1 T2 क्या थे? T1 T2 पैरामीटर है डिनोटिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स. सो T1 T2 कैन नेवर बी सेम. दैट्स द रीजन वी कैन कैंसिल दीज टू फैक्टर. दो सेम फैक्टर तभी कैंसिल करते हैं व्हेन दे आर नॉन जीरो. सिंस T1 एंड T2 आर डिफरेंट, दे कैन नॉट बी सेम. These factors are non-zero. Easily we can cancel. Now 2 times t2 square plus t1 square plus t1 t2 is equal to 3 t1 t2 plus t1. So 2 t2 square plus 2 t1 square plus 2 times t1 t2 is equal to 3 t1 t2 plus 3 t1 square. So now it is t1 square minus 2 t2 square plus t1 t2 equal to 0. We can make the factors. Factors are t1 minus t2 and t1 plus 2 t2 equal to 0. करके देखिए, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 t1 t2. So now from here t1 is equal to t2 or t1 is equal to minus 2 t2. Once again t1 t2 cannot be same. Once again t1 t2 cannot be same. So we will go with t1 is equal to minus 2 t2. और थोड़ी देर पहले निकाला था क्या? t1 t2 is equal to minus 1 by 9. So now solving these two, वैल्यू रख दो t2 की. t2 की वैल्यू रख दो, तो t2 की वैल्यू क्या रखोगे? minus 1 upon 9 t1. So in this way t1 square is 2 by 9. t1 square is 2 by 9. So our answer, equation of tangent at P, y minus 4 t1 cube minus 1 is equal to 3 t1 into x minus 1 plus 2 t1 square. Where t1 is equal to plus minus root 2 by 9. प्रॉब्लम को यहीं पे छोड़ दीजिए, इसके आगे से सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है. हमें निकालना था इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज टेंजेंट एट पी. सो आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ t1, नाउ वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p in which term of t1 is coming, which we can replace with plus minus root over 2 by 9. So we can say here we are getting two answer.
एक बार T1 की प्लस वैल्यू रखोगे और एक बार T1 की माइनस, तो इन दिस वे वी विल गेट द टू आंसर्स. फाइन. मैंने T1 में ही लिख के छोड़ दिया, T1 की वैल्यू लिख दी. आई एम नॉट टेकिंग पेन टू सिंप्लीफाई इट फर्दर. यहां तक काफी है. क्लियर? So this was our point number 7. Important points to remember. This was point number 7. Now I am coming to point number 8. Important points to remember. Point number 8. 7 में हम लोगों ने क्या देखा? A line tangent at one point can be normal at some other point. 8 में देखिएगा, आप कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए काफी. व्हाट आई एम राइटिंग? अ सेम लाइन could be tangent as well as normal. A same line could be tangent as well as normal to a given curve at some point P. अब ये आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकता है. इससे पहले वाला तो आप हजम कर गए थे कि tangent at one point, normal at other point. Now I am saying same line tangent as well as normal at the same point. Same line tangent as well as normal. A same line could be tangent as well as normal to a given curve at some point P. एक ही पॉइंट पर टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल. चलिए इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूं. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy. इसका नाम है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये नाम आपके लिए नया है. दिस इज नॉट इन योर सिलेबस. इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में यू विल सी सच काइंड ऑफ ग्राफ एंड दीज न्यू नेम्स. राइट नाउ जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको बता दिया कि at same point same line can be tangent as well as normal. For example, here in this curve at origin, for this curve at origin बताइए x axis किसका काम कर रही है? tangent का. अगर आप इस वाली ब्रांच के लिए देखोगे, for this branch x axis is working as tangent, but for this branch x axis is working as normal. So x axis working as tangent as well as normal. Similarly, y-axis working as tangent for the upper part. Same y-axis working as normal for the lower portion. अगर y-axis tangent का काम कर रही है तो y-axis का perpendicular किसका काम करेगा? नॉर्मल का. y-axis tangent का काम कर रही है तो y-axis का perpendicular क्या करेगा? नॉर्मल का काम करेगा. और x-axis अगर tangent है तो x एक्सिस का परपेंडिकुलर किसका काम करेगा? नॉर्मल का. तो y एक्सिस टेंजेंट का काम कर रही है, दिख रहा है. y एक्सिस नॉर्मल का भी काम कर रही है. हाउ? x एक्सिस टेंजेंट है तो उसका परपेंडिकुलर y एक्सिस क्या होगा? नॉर्मल. सिमिलरली x एक्सिस वर्किंग एज टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल बोथ. y एक्सिस ऑल्सो वर्किंग एज टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल. तो एग्जाम में कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए, कैन वी हैव अ कर्व where tangent and normal both occurring at the same point? Yes, it is possible. Now we are moving to important points to remember. Point number 9. We are moving to
important points to remember. Point number 9, it is if a curve passes through origin. If a curve passes through origin, then the equation of tangent at 0, 0 can be written directly equating lowest degree terms in equation of curve to 0. Now student, it's an important point. एग्जाम में डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0. You have a curve which is passing through origin. Now equation of tangent you can write directly equating lowest degree term to 0. For example, tangent to curve x cube plus y cube minus 3xy equal to 0 at 0, 0 is, देखिए लोएस्ट डिग्री टर्म क्या होता है इन अ गिवन एक्सप्रेशन. पावर ऑफ ईच टर्म इज कॉल्ड डिग्री. इफ टर्म्स आर इन मल्टीप्लीकेशन पावर इज एडेड. फॉर एग्जांपल इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, x की पावर 1, y की पावर 1 मिलकर डिग्री हो गई 2. तो डिग्री 3, डिग्री 3, डिग्री 2. हाउ वी फाइंड द टेंजेंट? इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0. Here lowest degree term is what? 3xy. So 3xy is equal to 0 or xy equal to 0. xy equal to 0 has two meaning. X equal to 0 and y equal to 0. X equal to 0 has meaning y axis and y equal to 0 has meaning x axis. So whenever you are getting a curve which is passing through origin, then equation of tangent at origin can be directly written. One more example I am taking. One more example I am taking, this time x cube plus y cube minus 3x square y plus x square minus y square equal to 0. X cube plus y cube minus 3x square y plus x square minus y square equal to 0. डिग्री 3, डिग्री 3, पावर 2 पावर 1 मिलके डिग्री 3, पावर 2 डिग्री 2. So is lowest degree term equal to 0. Now it has two meaning, x equal to y, x equal to minus y. Fine. So remember, whenever you have a curve passing through origin, tangent at origin we can write directly equating lowest degree term to 0. Is it? Now important point number 10. Tangent to an even function. Tangent to an even function at x equal to 0 will always be parallel to x axis.
tangent to an even function at x equal to 0 will always be parallel to x-axis. Take the example cos x, function cos x, y equal to cos x. What will be dy by dx? Sin x. At x equal to 0, dy by dx 0. यानी tangent parallel to x-axis. कोई भी इवन फंक्शन आप उठा लेना, आफ्टर डिफरेंशिएशन यू विल फाइंड स्लोप इज गोइंग 0 at x equal to 0. So that's the reason tangent at x equal to 0 will always be parallel to x-axis. Now curve parametric coordinates. Now x raised to the power 2 by 3 plus y raised to the power 2 by 3 is equal to a raised to the power 2 by 3. For this curve, if you have to assume parametric coordinate, you should assume a times cos cube theta, a sin square theta, sorry, sin cube theta. Think about it. Why? देखिए, when you will put it a to the power 2 by 3 cos square theta, a to the power 2 by 3 sin square theta, so it will come a to the power 2 by 3. Why we are talking about these parametric coordinates? We do our calculation assuming x1 y1. x1 y1 क्या होते हैं? दो अननोन हो जाते हैं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रेफर किया जाता है कि वी शुड एज्यूम सम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑन आवर कर्व टू स्टार्ट द प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल, such kind of curve is given to me. If I start my problem assuming it, then there will be only one unknown theta. Similarly, second curve, root x plus root y is equal to a. What should we assume? We should assume a square cos to the power 4 theta a square sin to the power 4 theta. जब आप a square रखोगे तो बाहर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा a cos square theta a sin square theta. Then c square times x square plus y square is equal to x square y square. सोचो, we have to assume parametric coordinate here. Then what should we take? आप इसको लाके इधर डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा? 1 upon y square plus 1 upon x square is equal to 1 upon c square. तो इसको एग्री करने वाला बनेगा c sec theta c cosec theta. चेक करो. Putting c sec theta c cosec theta in place of x and y. Do we get this curve satisfied? Yes. So these are some examples. These are some examples which we should prefer. These are some examples where we prefer to assume parametric coordinate in place of x1 y1. फायदा पूरी कैलकुलेशन में एक ही अननोन चलेगा थीटा, अदरवाइज x1 y1 दो अननोन हमारी कैलकुलेशन में दिखाई देंगे. Is it? Fine student. Now we have problem line x cos theta plus y sin theta is equal to p touching this given curve. Then we have to prove a cos theta raised to the power m upon m minus 1 b sin theta raised to the power m upon m minus 1 is equal to p raised to the power m upon m minus 1. What should we do here? We will find tangent from our side and then we will compare that tangent with given line. So simple. आप अपनी तरफ से टेंजेंट निकालिए और उसको गिवन लाइन से कंपेयर कर दीजिए. नाउ टेंजेंट निकालने के लिए वी विल नीड x1 y1 एंड x1 y1 मींस टू अननोन. सो हियर आई विल लाइक टू डू दिस प्रॉब्लम एज्यूमिंग पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट. और एक चीज और ध्यान रखना, थीटा ऑलरेडी पहले से गिवन है प्रॉब्लम में, तो जब आप पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट एज्यूम करेंगे तो डू नॉट एज्यूम इन टर्म्स ऑफ थीटा,
कुछ अल्फा बीटा लीजिए, थीटा आप नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी थीटा प्रॉब्लम में पहले से है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेट tangent is drawn at a times cos raised to the power 2 by m alpha, b times sin raised to the power 2 by m. देखिए मैंने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट अल्फा के टर्म में लिए है और इसको यहां रख के देखिए तो cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा 1, दिस विल बी सेटिस्फाइड. नाउ dy by dx, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप करके देख लीजिएगा. dy by dx विल कम dy by dx विल कम माइनस b by a आपका आएगा m टाइम्स x by a और साथ में एक 1 अपॉन ए आएगा. डिवाइड बाई डी एक्स जब आप करोगे तो m टाइम्स x बाई ए रेस टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 बाई ए, m टाइम्स y बाई बी रेस टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 बाई बी. तो यहाँ पे आपको 1 बाई ए आएगा और यहाँ पे आपको 1 बाई बी आएगा. तो डिवाइड बाई डी एक्स माइनस टाइम बी बाई ए, साथ में आपका आएगा x अपॉन ए. Now we will find dy by dx. So differentiating curve, we will get m times x upon a raised to the power m minus 1 into 1 by a plus m times y by b raised to the power m minus 1 into 1 by b dy by dx equal to 0. So in this way dy by dx dy by dx minus time b by a x by a divided by y by b raised to the power m minus 1, so it is minus b by a bx upon ay raised to the power m minus 1. Now dy by dx at parametric coordinate assumed will be माइनस बी बाई ए, और जब आप ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट वहाँ पे रखेंगे तो बी बी ए कैंसिल हो जाएगा. वी विल गेट कॉज अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा रेज टू द पावर 2 टाइम्स m minus 1 by m. This is our dy by dx. Now tangent at this will come y minus y1 is equal to dy by dx into x minus x1. Now it is, मैं b वाली टर्म से डिवाइड कर रहा हूँ और साइन वाली टर्म से मल्टीप्लाई. सो y अपॉन b माइनस साइन रेज टू द पावर 2 बाई m इंटू अल्फा इंटू साइन रेज टू द पावर 2 टाइम्स m माइनस 1 अपॉन m अल्फा is equal to minus टाइम x upon a minus cos
raised to the power 2 by m alpha into cos to the power 2m minus 1 upon m alpha. So now from here, x upon a into cos raised to the power 2m minus 1 upon m alpha plus y upon b into sin raised to the power 2m minus 1 on m alpha is equal to 1. स्टूडेंट इसको चेक करिएगा, आप में से मैक्सिमम को यहाँ कन्फ्यूजन आएगा 1 कैसे आ गया. चलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा. दीज टू टर्म जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो साइन की पावर 2 बाई एम और ये वाली टर्म क्या है 2 माइनस 2 बाई एम. जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे दे विल गिव साइन स्क्वायर. क्या बोला मैंने? साइन स्क्वायर. सिमिलरली जब ये मल्टीप्लाई होंगे क्या देंगे? कॉस स्क्वायर. इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से साइन स्क्वायर, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से कॉस स्क्वायर, वो मिलके 1 हो गया. दैट्स द रीजन आप देख रहे होगे कि सब कुछ गायब होके एक सिंपल सा इक्वेशन आ गया. सो दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. गिवन टेंजेंट इज x cos theta plus y sin theta is equal to p. Now हमने टेंजेंट निकाल लिया और हमें टेंजेंट गिवन क्या है? x cos theta plus y sin theta equal to p. We have found this line as a tangent already given to us. X cos theta plus y sin theta is equal to p. Now these two must be same. These two must be same means ratio of their coefficient must be same. Ratio of their coefficient must be same. So we will write cos raised to the power 2m minus 1 upon m alpha by a divided by cos theta is equal to sin raised to the power 2m minus 1 upon m alpha by b upon sin theta is equal to 1 upon p. अब ये cos ऊपर जाएगा तो ये है 2 माइनस 2 बाई एम, पावर 1 माइनस हो गया तो ये आएगा cos रेज टू द पावर 1 माइनस 2 बाई एम अपॉन a इज इक्वल टू साइन रेज टू द पावर 1 माइनस 2 बाई एम अल्फा b इज इक्वल टू 1 बाई p. सॉरी, एक मिनट, ये स्टेप हम लोगों ने गलत लिख लिया क्योंकि यहाँ पे cos थीटा sin थीटा चल रहा है. तो नाउ वी हैव cos रेज टू द पावर 2m माइनस 1 अपॉन m अल्फा डिवाइडेड बाई a cos थीटा इज इक्वल टू sin रेज टू द पावर 2m माइनस 1 अपॉन m अल्फा अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई p. Fine. So now from here we have a cos theta, b sin theta. So a cos theta will be how much? It will be p times cos raised to the power 2 m minus 1 upon m alpha and b sin theta p times sin raised to the power 2m minus 1 upon m alpha. Is it? No. What we have to prove? We have to prove a cos theta raised to the power m upon m minus 1, b sin theta raised to the power m upon m minus 1. So a cos theta raised to the power m upon m minus 1. This will be how much? P raised to the power m upon m minus 1 into cos रेज टू द पावर. इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पूरे की पावर m अपॉन m माइनस 1 क्या बचेगा? cos स्क्वायर अल्फा. b साइन थीटा रेज टू द पावर m अपॉन m माइनस 1 क्या आ जाएगा? p रेज टू द पावर m अपॉन m माइनस 1 साइन स्क्वायर अल्फा. नाउ क्लियरली देयर सम a cos थीटा रेज टू द पावर m अपॉन m माइनस 1 प्लस
b sin theta raised to the power m upon m minus 1 is how much? It is p raised to the power m upon m minus 1. In this way, we are able to prove. अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो p वाली टर्म कॉमन हो जाएगी, क्या बचेगा? cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा विच विल मेक 1. So a cos theta raised to the power m upon m minus 1, b sin theta raised to the power m minus 1 is clearly p raised to the power m upon m minus 1. Clear? So student, concept wise प्रॉब्लम में कुछ खास नहीं था, फिर भी आपको इस प्रॉब्लम में तकलीफ आ रही होगी जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन. देयर इज न्यू काइंड ऑफ कैलकुलेशन, लेंथी कैलकुलेशन, और जहां भी कैलकुलेशन लेंथी होती है वहीं पे चीजें आपको समझ में आना कम हो जाती हैं. डू दिस प्रॉब्लम 2 to 3 times. देयर इज नथिंग स्पेशल, ओनली एंड ओनली देयर इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कैलकुलेशन. ओके, सो today I have discussed important points to remember, and total 11 points I have given you. Now I hope you must be able to do problems on this chapter, tangent and normal. In our next lecture we will continue application of derivative, tangent and normal. Still some part is left in this application, tangent and normal. Clear? So now I am completing today's lecture. Okay.